Good morning everyone. Welcome to Ashwamik Vidyalaya. Myself Patel Dikshita and today we are learning about Standard 8 Subject Science Chapter number 17 Stars and the Solar System. Friends, in this unit we are discuss about celestial objects like stars, the planets, the moon and many other objects, and we also discussed about moon and surface of moon. Then we discuss about phases of moon and the stars. Then we discuss about constellation. Constellation means the star forming a group that's a recognized shape is called a constellation. Like Saptarshi constellation means Ursa Major constellation, and Orion, Cassiopeia and Leo Major. Then we discuss about our solar system. In the solar system, Sun is main source of solar system. Means Sun is produce heat and light for all the planets. Sun is main source of solar system, and then in this solar system 8 planets are present. Which 8 planets? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. In the last lecture, we had discussed about some planets like Venus, Mercury, Earth and Mars and Jupiter means Brihaspati. So, today we are moving to the next planet, that is Saturn. Saturn means sunny. Beyond Jupiter is Saturn, which appears yellowish in color. So, sunny का color कौन सा है? Yellowish. What makes it unique in the solar system is its beautiful rings. So, sunny means Saturn के around beautiful rings है. Okay? जो कि solar system में उसे सबसे अलग, different बनाती है, unique बनाती है. These rings are not visible with the naked eye. You can observe them with a small telescope. Saturn also has a large number of satellites. So, this is interesting because Saturn के around बहुत सारी rings है, beautiful rings, and we are not visible with the naked eye. It's only visible in telescope. And Saturn also has a large number of satellites. Satellites बहुत सारे हैं Saturn के. And then one interesting thing about Saturn, that is the least dense among all the planets. Its density less than that of water. So friends, आपने ऐसा कोई सब्सटेंस देखा है जिसकी डेंसिटी वाटर से कम हो? अगर किसी की भी डेंसिटी वाटर से कम हो तो क्या होगा? वो वाटर पे फ्लोट करेगा. ओके, लाइक आपने पेट्रोल एंड डीजल को देखा है. पेट्रोल एंड डीजल are float on water because its density is less than water. So friends, अगर हम Saturn को water पे रख दे तो क्या float करेगा? Look at here, it is Saturn and it is water. So Saturn क्या करेगा? Water पे float करेगा because Saturn's density is less than water. Like petrol and diesel. Okay. And MCB का नाम सुना है? Monochlorobenzene. Okay, so it is also less density than water. So अगर Saturn की शॉर्ट नोट पूछी जाए तो उसमें क्या आएगा? Saturn
appears like yellowish color. Then it have beautiful rings, and rings are not visible with naked eye. We all observe only in telescope. Then Saturn also has a large number of satellites. Then Saturn is less dense among all the planets, and its density is less than water. Now we move to the next planet. Discuss about the next planet. It is Uranus and Neptune. So friends, these are the outermost planet of the solar system. They can be seen only with the help of large telescopes. Like Venus, Uranus also rotated from ईस्ट टू वेस्ट. सो हमारी अर्थ वेस्ट टू अर्थ कैसे मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट. बट वेनस एंड यूरेनस कैसे मूव करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट. ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है. देन द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इज हैज हाईली टाइटल रोटेशन एक्सिस. As a result, its orbital motion appears to roll on its side. So, अगर हम यूरेनस को देखेंगे तो वो अपने एक्सिस पे भी, अपने ऑर्बिटल पे भी मोशन करता हुआ दिखाई देगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. द फर्स्ट 4 प्लेनेट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. प्लीज अंडरलाइन. कौन से फर्स्ट 4 planet Mercury, Venus, Earth and Mars are much nearest the Sun than the other 4 planets. They are called inner planets. Okay, what is inner planets? 4 planets Mercury, Venus, Earth and Mars are much nearest the Sun than the other 4 planets. So it is called inner planets. And the inner planets के मून्स मीन्स सैटेलाइट बहुत ही कम है. द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, नेमली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, आर मच फर्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट. सो वो सन के बहुत ही दूर है. जितने इनर प्लैनेट सन की नजदीक है उससे ज्यादा वो दूर है. कौन? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सो दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स. दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम. सो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के अराउंड रिंग है एंड उनके बहुत सारे मून्स मीन्स बहुत सारे सैटेलाइट है. द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. क्लियर दैट? नाउ we move to the next topic. It is some other members of the solar system. So हमने देखा कि सोलर सिस्टम में सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स मूव करते हैं, मीन्स रोटेशन करते हैं. बट उनके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं. There are some other bodies which revolve around the sun. They are also members of the solar system. Let us learn about some of them. So, वो कौन कौन से हैं? सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट वन इज एस्टेरॉइड. So, there is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter. Okay, so मार्स एंड जुपिटर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है. ओके, दिस इज अ मार्स एंड इट इज जुपिटर. सो मार्स एंड जुपिटर के बिटवीन बहुत ज्यादा गैप है. सो दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. देयर आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. सो
look at here, this is Mars and this is Jupiter. So between the Mars and Jupiter, many asteroids are revolution around the sun. Okay, and this gap is occupied by a large number of small objects. Okay, it's called asteroids. Asteroids can only be seen through large telescope, and these asteroids are seen only a large telescope. We cannot see asteroid by the naked eye. Okay, clear that? So the next one is comets. Comets are also member of our solar system. They revolve around the sun in highly elliptical orbits. However, their period of revolution around the sun is usually very long. A comet appears generally as a bright head with a long tail. The straight length of the tail grows in size as it approaches the sun. The tail of a comet is always directed away from the sun. So friends, look at here, this is a comet, okay, and this is the different position of a comet. So comets are also revolute around the sun, and many comets are known to appear periodically. So बहुत सारे ऐसे कॉमेट्स हैं जो कि पीरियडिकली हमें दिखाई देते हैं. ओके, एंड these comet have one large and light head, and this is tail of comet. Okay, one such comet is Halley's comet. Okay, it is the name of comet Halley's comet, which appear after nearly every 76 years. It last seen in 1986. Can you tell when Halley's comet will be visible again? So 1986 में हमने कॉमेट को कॉमेट 1986 में दिखाई दिया था. तो नेक्स्ट वो कब दिखाई देगा? सो कॉमेट विल बी विजिबल अगेन इन 2062. क्लियर? मीन्स वो आफ्टर 76 ईयर वो हमें वापस दिखाई देगा. द नेक्स्ट वन इज सुपरस्टिशन अबाउट द कॉमेट्स. सो बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशन है, मीन्स कहावत है या फिर ऐसी एक्सपेक्ट्स है जो कि कॉमेट से रिलेटेड है. सम पीपल थिंक दैट कॉमेट्स आर मैसेंजर ऑफ disasters such as wars, epidemics and floods, but these are all myths and superstition. Appearance of a comet is a natural phenomenon. We have no reason to be afraid of it. So कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये कॉमेट्स जो है वो डिजास्टर्स की मीन्स जो आपत्ति आती है उसकी निशानी है, लाइक वार्स, एपिडेमिक्स एंड फ्लड्स, बट दिस ऑल आर मीथ्स एंड सुपरस्टिशन. ओके, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, मीन्स वो नेचुरली दिखाई देता है. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड Saturn, Uranus and Neptune and some other members of the solar system like asteroids and comets. In the next lecture, we will discuss about the next one. It is meteors and meteorites. Thank you. Stay home, stay safe.